अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छी से गुजार रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आपके पास एक नई वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो में, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा, मैं साथ साथ रेडी होंगी और साथ साथ मैं आपसे बातचीत करूंगी, कुछ अपडेट दूंगी अपनी लाइफ के बारे में। ये दो काम मैं साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त की कमी है और मेरे पास सिर्फ 30 मिनट हैं या 40 मिनट हैं जिनमें ये वीडियो में शूट कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी और उसके बाद आई विल डू द रेस्ट ऑफ द मेकअप। आजकल मैं मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं कर रही और उसकी वजह ये है कि मुझे मेकअप इन जनरल भी इतना ज़्यादा करना नहीं पसंद, लेकिन आजकल यूनिवर्सिटी जब मैं जा रही होती हूँ तो मेरे जहन पे इतनी सारी चीज़ें सवार होती हैं कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं मेकअप करूँ। बट आई सॉर्ट ऑफ पुट इट ऑन ताकि मैं थोड़े से उस घर से निकल के बाहर जाने वाले माइंडसेट में आने के लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है अगर आप थोड़ा सा तैयार हो या इफ़ यू पुट सम एफर्ट इनटू गेटिंग रेडी। अदरवाइज आई डोंट रियली फील लाइक गेटिंग रेडी दीज डेज। जो सबसे पहली अपडेट मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि मेरा रिसेंटली अभी एक पेपर एक्सेप्ट हुआ है इन एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस and that conference is happening in Copenhagen, Denmark। और मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी थी और मुझे ये एक्सेप्टेंस लेटर काफ़ी पहले आ गया था, 2 हफ्ते पहले आ गया था आई थिंक, या शायद 1 हफ्ता और कुछ दिन पहले आया था, लेकिन मैंने किसी के साथ ये शेयर नहीं किया था सिवाय अपने हस्बैंड के साथ और अपनी बहन के साथ। बट फिर मैंने कल ये इंस्टाग्राम पे शेयर किया एंड आई गॉट सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम everybody and that was so cute। I mean मुझे पता नहीं क्यों बट जब भी मेरी कोई एकेडमिक सक्सेस होती है तो आई हैव अ टेंडेंसी टू अंडरमाइन इट और सॉर्ट ऑफ अंडरप्ले इट। आई डोंट लाइक सेलिब्रेटिंग इट मच। जब मेरा थीसिस एमफिल का हुआ था डिफेंस तो आई डिड सेलिब्रेट बट इतना ज़्यादा उसके लिए मेहनत की थी और हर में जब वो हो गया तो उस तरह से मुझे नहीं लगता कि मैंने इतने लोगों को बताया या इतनी ज़्यादा शेयर की अपनी खुशी किसी के साथ। बट इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं ये शेयर करती हूँ क्योंकि जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं एंड स्पेशली पीपल हु आर ऑन द सेम जर्नी एज यू, देन व्हेन यू गेट दैट sort of encouragement from them and I would say validation as well, and it's not only about validation but when you get that support from them, when you get that appreciation from them, you feel like doing more of that thing, of writing more, of researching more। और मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, सो मैं उनके साथ शेयर करना इज़ इवन मोर स्पेशल बिकॉज when you teach your students something and you are able to show it to them through your example, then it is even better। I think that is the best thing that can happen because I do have teachers who are very good researchers as well, they are very good scholars, and when they write and publish something and when I see it I feel so proud of them, and because I deep down I know that they are so good at whatever they do, and whatever scholarly work that they do, but when you see that final sort of you can say testimony to their scholarly work or scholarly efficiency, then you just feel so good। And same goes for other people around me, other women around me, or other friends around me who have done scholarly work। I just appreciate them very much। So yesterday I shared it with my Instagram friends and it just like there was such an outpour of support and I felt so happy about it। Another thing is that मेरा जब मैं अप्लाई कर रही थी उसमें पेपर सबमिट करवा रही थी तो मेरा ये ख्याल था कि I will try and go to Copenhagen if I can, because that is, I won't say that is a dream to go to Copenhagen. I don't think about Copenhagen all the time. It is not on my radar, but it would certainly be very nice to go there and
not only go there but also meet other scholars and learn about their works and their experiences. And Denmark is so beautiful. अगर आप थोड़ा सा explore करें on the internet, you will see that it is just so beautiful, and it's such a beautiful country, and Copenhagen is such a beautiful city, and I would love to go there. But फिर मैंने check किया अपना schedule भी, और सबसे ज़्यादा issue था funding का. Like it was costing me so much to go there for just 3 days, and then pay for accommodation, pay for travel, pay for everything else, pay for visa and everything. So I decided not to take on that hassle for now, because in my life right now I cannot afford to take another work commitment, and that is obviously a work commitment if I'm going to another country and presenting a paper and all of that. So yeah, I have decided to attend it virtually, and inshallah in some other case I will be going to a different country, inshallah, if Allah wills it. So I would love to go, but for now I'm attending it. Like I'm opting, oh my god, I'm opting for virtual participation. So yeah, that was a huge update that I wanted to share with my YouTube family as well. As far as my thesis is concerned, I'm very excited to tell you guys that these days I'm working on my conceptual and theoretical framework. Those are my favorite things to work on, because when I'm working on my conceptual framework, it just challenges me so much intellectually. So on my theoretical framework is just like a walk in a park, I'm telling you, because that is the kind of activity that I actually enjoy, an intellectual activity that I enjoy immensely. आजकल मैं अपना जो मैंने इनिशियल स्टेजेस में साइनॉप्सिस के स्टेज में, दोज ऑफ यू हु आर डूइंग रिसर्च, आपको पता है कि जब अपना साइनॉप्सिस आप सबमिट कराते हो तो यू डू प्रपोज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एज वेल, लेकिन उसकी जो डिटेल्स होती हैं उसके बारे में उस टाइम पे ऑब्वियसली आप इतना ज़्यादा नहीं बात कर सकते, आप उसके बारे में इतना ज़्यादा आपको पता भी नहीं होता. सो मैंने अपना जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क था उसको स्केच आउट तो कर लिया था. उसकी जो बोन्स थी उनको तो मैंने आई हैड वर्कड ऑन दैट, but I had not worked on the actual muscles of the framework. So these days I'm reading about it, and the more I'm reading, the more I'm finding out about my own conceptual framework, and it is such a learning experience. It is such a beautiful learning experience. और मैं अभी तक, इससे पहले मैं लिटरेचर रिव्यू करी थी और मुझे इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था. लिटरेचर रिव्यू इज़ वन ऑफ माई लीस्ट फेवरेट थिंग्स टू डू while writing my thesis, but conceptual framework, or you can also call it theoretical framework, although there is a difference between the two. अगर आप चाहते तो मैं इन दोनों के ऊपर एक वीडियो भी बना सकती हूँ. उसको आजकल मैं चॉक आउट कर रही हूँ और मुझे नई चीज़ें पता चल रही हैं, और माशाल्लाह आई एम फीलिंग सो क्रिएटिव विद माई माइंड दीज डेज. अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो मेरे बहुत सारे आइडियाज़ मेरे दिमाग में आ रहे होते हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. Here I want to make a point कि whenever you feel this way, whenever you feel creative and productive about research and about scholarship, make sure that you build a connection with Allah Ta'ala and pay your gratitude for what he has. Make sure that you build your connection with Allah Ta'ala and pay your gratitude for what he has allowed you to do, because if Allah Ta'ala doesn't grant it, we can't really do anything about it.
और ये बात हमें तब पता चलती है जब हम एक राइटर्स ब्लॉक से भी गुजर रहे होते हैं, और तब हमें इस बात की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि जब हमें आइडियाज़ आ रहे होते हैं या हम क्रिएटिव फील कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ सच अ ह्यूज blessing. Another thing that I want to update you on is my teaching routine, and that is very tough in this semester. I am teaching 4 different subjects, and although that does provide me with a lot of experiences, a diversity of them, but still it is very tiring to really teach 4 different subjects at the same time. I am teaching Pakistani literature, post-colonial literature, postmodern literature, postmodern fiction rather, and and modern fiction. I have taught 3 of those subjects previously, so it is not as if I'm dealing with something new entirely, but still I would prefer कि मैं एक semester में एक ही subject पढ़ाऊँ 4 different classes को. उससे ये होता है कि आपका focus जो है वो एक अपने lectures के ऊपर ज़्यादा रहता है, और आप थोड़े time में ज़्यादा चीज़ों के ऊपर रिसर्च वगैरह कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टीचिंग 1 novel at 1 time as opposed to 4 novels, तो उससे क्या होगा कि मेरे पास जो टाइम है अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करने का, I can prepare, I can read more research articles in that time. I can do so many other things in that one time, and I can lesson plan more effectively, I would say. So yeah, that is my teaching update. इसके बारे में भी I need to talk more to you guys. मैंने इतने दिनों से videos regularly नहीं बनाई, so I do have so much to talk about, and inshallah I will be talking about it जैसे जैसे मुझे time मिलता है. But today I just felt like getting the camera, talking about these things, sharing these things with you guys, and just it just felt right. It felt so good. So and this is my makeup. It's very simple but it was important for me to do it. Right now I'm going to go and prepare my lectures for today. There are going to be 2 lectures, one on Pakistani fiction, Pakistani literature. I'm teaching fiction at the moment in Pakistani literature, and then post-colonial literature. So I'm going to go and prepare my lectures, and I hope that you enjoyed this video. If you did, give it a thumbs up, and to subscribe to my channel if you haven't already, because I will be making more videos on literature, English literature, literature in general, and on research and on scholarly pursuits. So I hope that you stay happy and healthy, and yeah, see you soon. Allah Hafiz.